Mother of nation. Yes, इसका ऑप्शन सी है, सही बताया आपने. The first woman who represents the Muslim women in three round table conference in London was Begum Jahan Ara Nawaz, Bilqis Idi, Fatima Jinnah, Begum Rana Liaquat Ali Khan. मैम जी. बेगम राना लियाकत अली खान. Yes. And Bilqis Idi was awarded as Hilal Imtiaz, Nishan Haidar, Sitara Imtiaz, Sitara Jurrat. क्या मिला था उनको? हिलाल इम्तियाज. Yes. Or Professor Anita Ghulam Ali was appointed twice as a Minister of Culture, Education, Science and Technology, Youth and Sports. मैम इसका कंफर्म नहीं है एजुकेशन. कंफर्म नहीं था, लेकिन आपने आंसर सही दिया है. इसका आंसर एजुकेशन ही है. ठीक. Okay, let's move on to our chapter. Okay. So the name of the chapter is The Secret of Success. Would you like to read? नो मैम, नो मैम. Why? रीडिंग अच्छी नहीं है इसलिए. यस मैम. अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं. Okay, the secret of success. A long time ago, there lived a king who was in search of the secret of success. He thought if he could find out the answers to three questions, he would discover the secret and never fail. He thought and thought for many days, but the answers evaded him. So he called all his ministers and asked them three questions. What is the most important time to start something? What is the most important work to do? Who is the most important person? अच्छा, अब यहाँ पे एक कहानी सुनाई जा रही है कि काफी अर्सा पहले एक बादशाह रहता था. उसको जो है वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानना था, कामयाबी का राज जानना था. और उसने सोचा कि अगर कोई भी इन तीन सवालों के जवाब दे सकता है तो मतलब उस बंदे ने कामयाबी का राज जान लिया. ठीक है, उसने काफी दिनों तक उन सवालों के जवाब ढूंढे खुद से, मगर उसे नहीं मिले. तो उसने एक दिन क्या किया, उस दिन एक दिन अपने दरबार के अंदर सारे जो है अपने मिनिस्टर्स, वजीरों को और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन सबको बुलाया और उनके सामने तीन सवाल किए कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या होते हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन होता है. But none of them could come up with a satisfactory answer. Next, he called all his courtiers and asked them the same questions. They discussed and debated for long, but none of their answers satisfied the king. उसने काफी टाइम तक लोगों को बुलाता रहा, तो सवाल करता रहा, मगर किसी के जवाब ने भी किंग को सेटिस्फाई नहीं किया. He then called the wise and learned men of his country to his court. He discussed the problem with them for many days. They too were unable to satisfy the king because they could not see eye to eye with each other and ended up arguing amongst themselves. They came up with many different answers, but none of the answers provided any meaningful solution. अब जैसे कि मैंने बताया कि किंग ने जो है अपने पूरे नेशन के सबसे पढ़े लिखे लोगों को बुलाया और उनसे ये सवाल किया, मगर उनका भी किसी जवाब ने किंग को जो है वो तसल्ली वाला आंसर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके खुद के आपस में इख्तलाफात थे. मगर जैसे कि एक आदमी जवाब दे रहा है, दूसरा उससे कह रहा है कि नहीं तुम इसका जवाब गलत दे रहे हो, मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो सही है. ठीक है, तो एंड में क्या हो जाता है कि वो सारे के सारे जो है आपस में लड़ना झगड़ना स्टार्ट हो जाते थे, और जवाब जो है वो आने के बजाय वो कहीं और ही डिविएट हो जाता था. तो किंग जो है वो उनसे डिसअपॉइंट हुआ कि उसे जवाब नहीं मिले. उसके बाद क्या हुआ, द किंग देन आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू अनाउंस दैट whoever answers these questions would get a reward of 5,000 gold coins. Many people came and talked to the king, but their answers did not satisfy the king.
अब किंग ने जो है एक ऐलान जारी करवा दिया कि जो भी मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसे 5,000 सोने के सिक्के दूंगा। अब काफी सारे लोग आए, उन्होंने आके जवाब देने की कोशिश की, मगर किसी का भी जवाब ने किंग को जो है वो मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। At some distance from the capital there was a jungle. The king had heard that in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint. He lived all alone. His fame had spread far and wide as someone who would have solved everyone's problem. The king decided to consult the wise old saint, but the problem was he only mixed with the poor and needy. He did not mix with the rich and wealthy. Since the saint did not like meeting wealthy people, the king started thinking as how to approach him. अब उसने ये सुना कि शहर से कुछ दूरी के फासले पे एक जंगल है और वहां जो है एक आदमी रहता है जिसको लोग एक सेंट समझते हैं। सेंट किसको कहते हैं? वली टाइप जिसको कहते हैं ना, कि अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी से कोई ताल्लुक लेना देना ही उनका नहीं होता। और वो मशहूर किस वजह से था कि जो भी उससे कोई आके सवाल करता था वो उन सबको उन सवालों के सही सही जवाब देता था। ठीक है, तो किंग ने सोचा कि मैं इसके पास जाके जो हूँ इससे ये 3 सवाल करता हूँ, मगर एक प्रॉब्लम थी कि वो जो आदमी था, वो बूढ़ा आदमी, वो सिर्फ सिवाय उन लोगों के जो सच में जरूरतमंद हो और सच में गरीब हो, उनके अलावा किसी से मिलता ही नहीं था। मतलब उसको ये नहीं पसंद था कि मुझसे कोई अमीर ज्यादा आके मुझसे मिले या मुझसे कोई बात करे। तो ही वॉज ऑलवेज लाइक, उसको पसंद था ऐसे लोगों में बैठना जो कि उसके तबके से ताल्लुक रखते थे। तो किंग ने जो है वो सोचना स्टार्ट कर दिया कि उससे अब वो किस तरीके से अप्रोच करे। उसने मंसूबे बनाना स्टार्ट कर दिए। द किंग pondered and thought deeply about a way to meet the saint. Soon he came up with a plan. He dressed himself in rags and set out to see the wise old saint. Since he wanted to appear poor and destitute, he asked his servants to remain behind him. Alone, he headed straight for the saint's hut. अच्छा, अब उसके दिमाग में क्या आइडिया आया कि अगर वो अपने आप को एक गरीब इंसान की शक्ल में तब्दील कर ले तो वो जाके उस आदमी से मिल सकता है। उसने क्या किया, उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, अपना हुलिया ऐसा बना लिया कि वो सच में गरीब और नीडी है। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपना गार्ड्स को कहा कि तुम लोग मेरे पीछे मत आना, तुम लोग दूर ही खड़े हो, मैं खुद अकेला जाऊंगा उससे बात करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया रैग्स। रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। When the king arrived at the hut, the saint was digging the ground in front of his hut. He was old and weak, and he worked. He was breathing hard. He tired, and he tried quickly and stopped frequently to rest. The king approached him and addressed him directly. Sir, I have come a long way to ask you the questions of three answers of three important questions. The king continued, my first question is, what is the most important time to start some work? My second question is, what is the most important work to do? And third, who is the most important person? Humbly, the king continued, would you kindly help me by telling the answers to these questions? और किंग जो है जब वो उसके हट के पास जा रहा है तो वो क्या देखता है कि बूढ़ा जो है वो खुदाई कर रहा है अपने घर के सामने, और वो बहुत जल्दी थक रहा होता है और वो काफी हाँफ भी रहा होता है। और वो जैसे कि वो बूढ़ा है, उसके अंदर इतनी जान तो है नहीं कि वो इतना हैवी काम करे। तो किंग क्या करता है, उसे अप्रोच करने के बाद डायरेक्ट शुरू हो जाता है कि मेरे पास ना 3 सवाल है, मैं आपसे उन सवालों के जवाब मांगने आया हूँ। और वो उनसे वो 3 सवाल रिपीट करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन सा है, और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है किसी काम को स्टार्ट करने का। The saint paid no attention to the king and continued digging. The king waited for a few moments and then said, Sir, you look tired. Let me dig the ground for you. अच्छा, अब जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, उसने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उसने कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी इसकी बात को और उसने अपना काम करने में वापस चला गया, मशगूल हो गया कि वापस खुदाई करने लग गया। तो किंग जो है वो थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा कि अब मेरी बात सुनेगा, अब मेरी बात सुनेगा, मगर उसने सुनी ही नहीं। तो इसने एंड में क्या किया कि आप मुझे थके थके लग रहे हैं, लाए मैं आपका काम कर देता हूँ। The saint thanked him and gave him the spade, and the king started digging. After some time, the king repeated the questions and requested the answer, but all that the saint said to the king was, let me dig now. The king did not give him the spade and kept digging. He remained calm and did not lose patience. The hope that he would find the answer to his questions kept him motivated.
and determined. When evening fell and the light began to fade, he stopped digging and turned to the saint. He said, "Could you please let me have the answers to my questions now?" अच्छा, अब जब उसने बोला कि ना मुझे दे दे, मैं खुदाई कर देता हूँ, तो सेंट जो होता है उसको शुक्रिया अदा करता है और उसे भाला दे देता है। उसके बाद जो किंग जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो है किंग दोबारा ही सवाल करता है, लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस सवाल के जवाब देने के बजाय कहता है कि अच्छा आप हटाओ, मैं खुदाई कर लेता हूँ। मगर किंग उसे जो है वो काम करने दे नहीं रहा होता। वो काफी देर तक ना सुकून से काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद होती है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अब रात होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर से वही सवाल पूछता है कि अब क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे देंगे। The saint remained silent and pointed to one side. The king glanced in that direction and saw that a bearded man with a dagger in his hand was running towards them. When he reached them, he fell down and fainted. The king straightaway picked up the bearded stranger and carried him into the hut and laid him down on the ground. The king noticed that the man was injured, so he immediately took steps to stop the bleeding, and with the help of the saint, he bandaged his wounds. The bearded man fell into a deep, restful sleep. अब जब उसने दोबारा सवाल किया तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर उंगली उठाई। तो उसने मुड़ के देखा तो एक आदमी बड़ा जख्मी हुआ हुआ, उसके हाथ में चाकू था। वो लेके उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा होता है, वो उनकी तरफ आते ही जमीन पे गिर जाता है। तो किंग क्या करता है, फटाफट उसे ऊपर उठाता है और उसकी मरहम पट्टी वगैरह करता है। तो जैसे ही वो करता है तो आदमी जो होता है वो काफी गहरी नींद में सो जाता है। By now, night had fallen and it was very dark. The king was too tired to return home. The saint invited him to stay the night, and the king accepted the saint's hospitality. The saint prepared some simple food and provided the king with a bedding of hay to sleep on. अच्छा, अब यहाँ पे जो रात होना स्टार्ट हो जाती, काफी रात हो जाती, तो किंग जो होता है वो इतना थका हुआ होता है कि उसे घर जाने की हिम्मत नहीं होती। तो सेंट जो होता है, बूढ़ा आदमी जो होता है, वो उसे ऑफर करता है कि आओ तुम आज मेरे साथ सो जाओ, और उसको जो है बिस्तर बना के देता है। व्हाट, हे बेडिंग, हे बेडिंग कहते हैं भूसा होता है ना, उसका बिस्तर बना के उसे देता है कि अच्छा तुम इस पे सो जाओ। At break of day, the king awoke. He found that the bearded man too was awake. The king said, "How do you feel now?" The bearded man replied, "I am better now, thanks to your majesty. Forgive me. I came to kill you because you had my brother killed. I became your bitter enemy out of grief. I was hiding and waiting for your return. As you did not return, I came out my hiding place. That's when your servant saw me. They immediately recognized me. They wounded me seriously, but I escaped. Have you not cared for me, I could have died. I thank you now. Count on me as one of your most faithful servants." Saying this, he saluted the king and left. अच्छा, अब जब वो किंग सुबह उठता है तो वो क्या देखता है कि जो आदमी जख्मी हुआ हुआ आया था वो भी उठा हुआ है। और वो उससे पूछता है कि अच्छा अब तुम्हारी तबीयत कैसी। तो वो कहता है कि असल बात ये है कि मैं आपको मारने आया था, क्योंकि आपकी वजह से मेरे भाई की जो इज्जत हुई होती है। मैं आपसे बदला लेने के लिए आया था, मगर मैं आपसे बदला ले नहीं सका, क्योंकि अगर आप मेरी हिफाजत ना करते, आप उसकी बर्फ पट्टी ना करते, तो शायद मैं मर चुका होता। उसको मारता कौन है, जो किंग के बंदे होते हैं जिनको पीछे छोड़कर आया होता है वो उसे मारते हैं, क्योंकि वो उसे पहचान चुके होते हैं कि ये बंदा जो है ये बंदा है और ये हमारे किंग को मारने के लिए आया है। When the bearded man had departed, the king again asked the saint for answers to his question. The saint replied, "Your questions have already been answered. First, the most important time was when you wanted to help me. The most important work was the digging of the ground, and I was the most important person for you. Had it not been so, you would have returned and been killed." तो वो कहता है कि अब जब उसे दोबारा सवाल करता है तो स्टेन कहते हैं कि तुम्हें इन सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो वो पूछते किस तरीके से। तो वो कहता है कि तुमने अभी सबसे पहला वो काम किया कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, कि तुमने मेरी मदद की। ठीक है, और मतलब टाइम क्या था काम करने का, जब तुमने ये कहा कि आए मैं आपकी मदद कर दूं। दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था, कि जब तुमने मेरी मदद की, कि तुमने गड्ढा खोलना है, मेरी हेल्प की। तीसरा ये, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अभी इस वक्त मैं था। और अगर क्योंकि अगर मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंट नहीं होता तो तुम जो एक टाइम पे एग्जॉस्ट होकर वापस मुड़ के घर चले जाते, और हो सकता है कि तुम वहां जाके मर चुके होते, क्योंकि वो बंदा तुम्हें मारने आया था।
The saint continued, the second time the most important man was the bearded man. The most important work was dressing his wound. Had it not been so, you would have not have won a faithful servant. You are truly very fortunate. फिर वो कहते हैं अब दूसरी चीज ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बंदा मेरे बाद वो आदमी था, बियर्डेड आदमी जो जिसको चोट लगी हुई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि तुम उसकी मरहम पट्टी करो। ठीक है, और अगर तुम ये सारे काम ना करते तो हो सकता था कि तुम्हारे पास एक इतना लॉयल और एक बंदा ना आता जो कि तुम्हें सर्व करने को तैयार हो। So this is the moral of the lesson. The important time for doing anything is the present. The most important work is what we are doing now. And the most important person is the one with whom we are doing at the moment. ठीक है, अब यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम अभी का है, प्रेजेंट का है। सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है जो हम अभी कर रहे हैं। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ हम बैठे हुए हैं अभी इस मोमेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए काम जो है वो ये है कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ये है कि आपके लिए मेरे लिए मेरा स्टूडेंट है, आपके लिए आपकी टीचर है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखना। स्टोरी समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओके, ठीक है। तो लेट्स एंड आवर क्लास है बिकॉज हमारी स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक सेकेंड, ये वाले एमसीक्यूज कर लेते हैं। Which one of the following statement best summarizes the theory? The present has all the answers. The present is not what matters. The present is the most important time. The present gives you the most joy. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है? मैम सी। Yes, see, the present is the most important time. The saint who lived in the jungle was a very rich man, poor man, severe man, या wise man? बी। बी? नहीं, बी नहीं होगा। वो पुअर तो था मगर उसके अलावा वो वाइज था। उसको सारे मतलब उसने आप किंग को उसके सवालों के जवाब इस तरीके से दिए कि उसने प्रैक्टिकल वे में आके उसको जवाब दिया कि उसकी बात समझ में भी आ गई। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं वाइज। ठीक है, The king went to see the saint all alone with all his soldiers, along with his family, with all his courtiers. मैम ए। Yes, A. Who warned the king that the bearded man was coming? The soldiers, the saint, his servants, his ministers. मैम ही सेड दी सेंड। G, the saint. After the bearded man left, the saint told the king that he would not answer his questions. His questions were too difficult. The bearded man had answered his question. All his questions had been answered. मैम डी। Yes, exactly. तो ये भी हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। So let's stop our class here.